Hello everyone, myself Ambareen. Today I will explain you Leucida parallelism in chapter number 8, parallel transport. Leucida parallelism means given an n surface S in R raised to n plus 1 and the parameterized curve alpha from I tends to S, a smooth vector field x tangent to S along alpha is said to be Leucida parallel or simply parallel if x prime equal to 0. Means covariant derivative is 0. Means thus x is a parallel along alpha if x is a constant vector field along alpha as sense from इन जो वेक्टर फील्ड है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो उससे क्या पढ़ेंगे, ल्यूसिडा पैरेललियम्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूसिडा पैरेललियम में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एक्स इज पैरेलल अलोंग अल्फा देन एक्स हैज़ कांस्टेंट लेंथ. यहाँ पे दिया है एक्स पैरेलल अलोंग अल्फा रहेंगे तो उसकी लेंथ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. कांस्टेंट है मतलब इक्वल टू 0 है. यहाँ पे लेंगे सिंस दिया, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स इज पैरेलल x parallel implies that x prime equal to 0 by definitions. d by dt of norm of x square equal to, ये जो हमें नॉर्म ऑफ एक्स इसके लिए हमें क्या बताना है, कांस्टेंट बताना, मतलब इक्वल टू 0. तो डी बाई डी टी ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स डॉट एक्स बाय प्रोडक्ट रूल. इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स डैश प्लस एक्स डैश इंटू एक्स. we know that x dash equal to 0 means x into 0 plus 0 into x. ये हो जाएगा 0 plus 0 equal to 0. यानी d by dt of norm of x square equal to 0 means norm of x square is constant, implies that norm of x is constant. नॉर्म ऑफ एक्स कांस्टेंट है यानी उसकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू पैरेलल वेक्टर फील्ड अलोंग अल्फा देन एक्स डॉट वाई इज कांस्टेंट. एक्स एंड वाई आर टू पैरेलल वेक्टर फील्ड रहेंगे अलोंग अल्फा देन एक्स डॉट वाई इज कांस्टेंट. ये प्रूफ करना है. तो सिंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर पैरेलल implies that x prime equal to 0 and y prime equal to 0, implies that x dot y prime equal to by product rule x into y prime plus x prime into y. We know that y prime equal to 0, so x into 0 plus x prime 0 0 into x, तो हो जाएगा 0. तो implies that x dot y is constant. थर्ड प्रॉपर्टी है if x and y are parallel along alpha then the angle cos inverse of x dot y divided by norm of x into norm of y between x and y is constant along alpha. तो हम बताना कि जो एंगल है इसमें x एंड y क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पर सिंस x यहाँ पे दिया हुआ है वी नो दैट x एंड y आर पैरेलल. फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 and 2 1 and 2
norm of x and norm of y are constant from property number 1 and from property number 2 x dot y are constant. X dot y is constant. It implies that cos inverse of x dot y upon norm of x into norm of y is also constant. Third property हो गई. Fourth property है if x and y are parallel along alpha then so are x plus y and cx for all c belongs to real number. तो हमें बताना है कि ये दोनों भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, पैरेलल है. ये इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दिया हुआ है हमें x एंड y आर पैरेलल, x प्राइम पैरेलल है तो बाय डेफिनेशन x प्राइम इक्वल टू 0 एंड y प्राइम इक्वल टू 0. वी नो दैट इम्प्लाइज दैट x plus y prime equal to x prime plus y prime. X prime also 0 plus y prime is also 0 equal to 0. So implies that x plus y is parallel. Similarly, c into x prime equal to c into x prime, and we know that c into 0 equal to 0. So implies that cx is parallel for all c belongs to R. By property number 5, the velocity vector field along a parameterized curve alpha in S is parallel if and only if alpha is geodesic. Let alpha be a geodesic on S. यहाँ पे हमें दिया हुआ अल्फ़ा क्या जियोडेसिक से, तो बाय जियोडेसिक डेफिनेशन अल्फ़ा डबल डॉट टी सबसेट ऑफ एस ऑफ अल्फ़ा टी पर, बट एस ऑफ अल्फ़ा टी पर इक्वल टू लैम्मा इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा टी सच दैट लैम्मा बिलोंग्स टू आर. अल्फ़ा डबल डॉट t equal to lemma into del of alpha of t for some alpha belong to R. To prove that the velocity vector alpha dot is parallel, we know that alpha dot is parallel. That is to prove that alpha dot prime equal to 0. We know that x prime of t equal to x dot t minus under bracket x dot t into n of alpha of t. X dot of t equal to x prime of t equal to x dot of t minus x dot of t into n of alpha of t into n of alpha of t. We rearrange the terms alpha of t, alpha dot prime t equal to alpha double dot t minus alpha double dot t into the dot product of n of alpha of t into n of alpha of t. We know that this terms is scalar, तो उसे लैम्बा ले लेंगे, लैम्बा इंटू डेल ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी माइनस लैम्बा इंटू डेल ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी इंटू डेल ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी अपॉन नॉर्म ऑफ डेल ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी इंटू डेल ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी अपॉन डेल ऑफ अल्फा टी. लैम्बा ये टर्म एज इट इज़ आएंगे, यहाँ से ले लैम्बा डेल ऑफ
अल्फ़ा डॉट ऑफ टी माइनस, यहाँ से नॉर्म ऑफ डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी इसे कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे अंडर ब्रैकेट बचेगा लैम्बडा डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी इंटू डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी। तो लैम्बडा डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी माइनस लैम्बडा डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, लैम्बडा डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी। तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। दिस प्रूव दैट द वेलोसिटी वेक्टर फील्ड अल्फ़ा डॉट इज पैरेलल टू एस अलॉन्ग अल्फ़ा। अब यहाँ प्रूव हो गया कि अल्फ़ा डॉट क्या है, पैरेलल है। इफ़ एंड ओनली इफ, तो इसका कॉर्नर्सली पार्ट भी लेंगे। तो कॉर्नर्सली assume that alpha dot prime of t equal to 0 implies that alpha double dot of t minus under bracket alpha double dot of t into norm of alpha of t into norm of alpha of n of alpha dot of n of alpha of t equal to 0 by definition। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा डबल डॉट यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ये टर्म हमें हासिल होगी। यहाँ पे 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ स्क्वायर इंटू अल्फ़ा डबल डॉट ऑफ टी इंटू डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी इंटू डेल ऑफ अल्फ़ा ऑफ टी। ये पूरी टाइम अल्फ़ा स्केलर है तो इसे लैम्बडा ले लेंगे, लैम्बडा इंटू डेल ऑफ अल्फ़ा डॉट ऑफ टी। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एस अल्फ़ा टी ऑफ पर। तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा डबल डॉट ऑफ टी बिलोंग्स टू एस अल्फ़ा टी ऑफ पर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई। दिस मीन दैट अल्फ़ा इज जियोजेसिक ऑन एस। थैंक यू।